Well, before a week, one of my students asked me that, sir, could you please make the video on be, how to use be in grammar and in spoken. Well, I have come up with the video how to use be. Maybe I can make the video in parts. This is the first part of this series, so watch the video till the end and put the comment downside how was the experience with this video. Alright, let's jump into it. If ever I had a video. See, concentrate on the video because this video is going to be superb and it's really very important rule of the grammar and as well as in spoken. Well, sometimes it happens that people think that we means hona, like, but I don't think so that there would be a Hindi of this word. I think there is no Hindi of this word. There are particular uses of this word, that is be. First of all, let's understand that how be comes. There are three things which come with be. First is be verb third form, be verb ing form, and third be plus noun. Noun is called no action at American Institute. Alright. After be you can use only three things: third form, ing form, and no action. It means noun. But you can never use first form after be, you can never use second form after be. Whenever be comes, it comes with only three things: this, this, and this. Now let's have a look on the form of be. How many forms are there? There are three forms of everything. That is, the be is called is mr in present, be is called was were in the past, and the third form is be, been. The third form of the be is been. Now we have to understand how to use these things with be. Alright, today I'm going to teach you only first rule of be. Then in the next video I may teach you the second rule, and in the third video I may teach you the third rule. Well, let's get started. The first rule of the be. Well, in this video we are going to talk about how to use ing form after be. Well, there are only two simple rules in which we use ing form after be. The first is doer should be action ing. Action means verb in grammar. Alright, doer means subject. Alright, so doer should be action ing. When you want to give the suggestion to anybody who is standing in front of you, and the suggestion that you are giving him, he should be doing at the moment. At that situation we use should be action ing. Let me make you understand in Hindi. Suppose आपको किसी को सजेशन देना है और जो सजेशन आप उसको दे रहे हो वो ये है कि उसको ऐसा काम अभी करना चाहिए, बोलने के तुरंत बाद, राइट? या अब आप वीडियो देख रहे हो, अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा जो कि आपको अभी करना है. जैसे मैंने बोला, माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको अभी के अभी कमेंट करना चाहिए इस वीडियो पे. यू शुड बी पुटिंग द कमेंट ऑन दिस वीडियो. यू शुड बी पुटिंग comment on this video, right? Second example, suppose your friend has got the accident. तो आप, मैंने आपसे पूछा भाई व्हाट हैपन, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो आपने, सर मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट हो गया, तुम यहीं बैठे हो, तुम तो अभी कभी जाना चाहिए यार. यू शुड बी गोइंग राइट नाउ. यू शुड बी गोइंग राइट नाउ. अब आप पूछेंगे सर ओके शुड बी तो हमें समझ में आ गया, तो फिर शुड अकेला यूज कब होता है? हाँ, वो सजेशन जो आप सामने वाले से अभी नहीं करवाना चाहते वो कभी भी कर ले, उनके लिए शुड यूज होता है. जैसे कि मैंने बोला जिम नहीं जाते आप, जाना चाहिए वैसे, यू शुड गो टू जिम. अब यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे यू शुड बी गोइंग टू जिम, नहीं, यू शुड गो टू जिम, इट्स योर चॉइस. मैं बस सजेशन दे रहा हूँ, यू शुड गो टू जिम. बट सपोज आप मोबाइल छोड़ा है जिम में, फोन आ रहे होंगे इंपॉर्टेंट, तो मैंने बोला मोबाइल कहाँ है? सर वो तो जिम में छोड़ा है. अभी के अभी जाना चाहिए तुम्हें उसको लेके, तुम यहां बैठे हो. यू शुड बी गोइंग राइट नाउ. यू शुड बी गोइंग राइट नाउ. यू शुड बी पिकिंग अप द कॉल. कोई कॉल कर रहा है, आपको कॉल उठाना चाहिए. यू शुड बी पिकिंग अप द कॉल, राइट? तो देखिए कितना सिंपल है. शुड बी कब आएगा? जब आपको एट द मोमेंट पे सजेशन देके उस काम को बोलना हो कि अभी के अभी आपको ऐसा काम करना चाहिए. शुड बी फर्स्ट रूल. सेकंड रूल,
सेकंड रूल यूज होता है शुड की यहाँ जगह पर हम लगाएंगे अब विल। क्या लगाएंगे बाबा? बिल। लेकिन उसका रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। डूअर विल बी एक्शन आईएनजी। इट मीन्स डूअर फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होगा। डूअर ऐसा काम कर रहा होगा। डूअर ऐसा काम कर रहा होगा। जैसे मैंने बोला, सुनो कल मैं आपसे दोपहर में मिलने आऊँगा, तो आपने पूछा कितने बजे, तो मैंने बोला अराउंड 2 o'clock। तो नहीं यार 2 बजे मत आना, 2 बजे तो मैं ना एक्सरसाइज कर रहा हूँगा। आई विल बी डूइंग माई exercise around AROUND अराउंड 2 o'clock, राइट। उस टाइम पे तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँगा। मैं बोला ठीक है, फिर कल क्या कर रहा है दोपहर में? कल दोपहर में परसों दोपहर में क्या कर रहा है? परसों दोपहर में तो मैं यार दोपहर में तो मैं ना उस टाइम पे तो मैं अपना क्लास अटेंड कर रहा हूँगा। आई विल बी अटेंडिंग द क्लास। आई विल बी अटेंडिंग द क्लास। आई विल बी अटेंडिंग द क्लास। उस टाइम पे तो क्लास अटेंड कर रहा हूँगा। अब यहाँ भी बी नहीं आया तो आईएनजी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब आएगी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म? जब आप सर्टेन हो, आप श्योर हो कि फ्यूचर में ऐसा काम होगा। कल आओगे? हाँ, आई विल कम टुमारो। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आपको आराम से यूज़ करना आता है। बट अगर बी यूज़ करना है तो इसका मतलब है कि ऐसा काम हो रहा होगा। वो तो सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग। ही विल बी स्लीपिंग। वो सो रहा, अरे वो आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग सून, डोंट वरी, राइट। सो इन दिस वे वी यूज बी वर्ब एक्शन आईएनजी। आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। आया हो, पुट द कमेंट डाउन साइड। आई थिंक यू शुड बी पुटिंग द कमेंट डाउन साइड राइट नाउ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट